So welcome you all to the training session on ISO 9000 2015 Quality Management System Internal Auditor. Today is the 14th session and it's the concluding session of this training program. So today we are going to finish this session, finish this course basically. In today's session, after the clause of confidentiality, we will go through the NC auditing or NC scenario exercise number 3. We have discussed 1 and 2 yesterday. So today we will go through the scenario number 3, and after that we will go through whatever we have learned, what are the major topics we have covered in this training program, and then we will discuss and we will let you know what are the evaluation method to get certified as an internal auditor. So what kind of assignments will be there, where to access that assignment, how to submit that I will tell you, and then quickly go through whatever the other training programs we have. So clause of confidentiality, as we are telling you at the start of every session, the training content is of proprietary nature. Do not share the training content, screenshots, the assignments or the recordings on any of the public platform, not to your friends unless and until permitted by us. Share the knowledge, do not share the contents directly. Finding NC scenario and reporting. This we have discussed yesterday, that okay, it will be a ready reckoner for you people. I have shared it on your WhatsApp also. So I advise you to print it, maybe a small version of this one, and always keep this in your pocket. Now this was the audit scenario. Okay. Now Mr. Abbas, could you please read this one? Mr. Abbas, can you read this? Audit scenario 3. Your voice is not audible. Okay. Mr. Prashant, can you please read? If it's quite, if it's not a problem to you. Auditor was auditing the final inspection and dispatch section. In the warehouse, he observed product number 123456 is lying. The dispatch supervisor tells the auditor that the material is ready for dispatch as the OK stamp is on the material level. The auditor verifies the final inspection records for this product number 123456 and finds that the release is authorized by Mr. ABC. When checked, you find out that Mr. ABC is a junior supervisor QC. When asked dispatch supervisor about who is authorized to release the product, he says that normally we do not seek release authorization from such regular dispatches. In case of any issue observed in the material, QC manager XYZ gives the decision for rework or alternate usage. Auditor checks the organization product release procedure and find out that QC manager is made responsible for authorize the release of all the products for dispatch. Okay. So now everybody must be knowing that yes, this is related to the product release, release of the product. Now all these things are related to the product release, not delivery of the product, release of the product, and that clause number is in the operation, and that is 8.6. okay, that is release of products and services. So 8.6, you go to the 8.6. Then what is the requirement, what the standard asks you? Okay, the standard asks you the organization to implement the planned arrangements at appropriate stages, at dispatch stage or at the production stage, okay, at intermediate stages, to verify that the products and services requirements have been met. The release of products and services to the customer shall not proceed until the planned arrangements have been satisfactorily completed, unless otherwise approved by relevant authority or by customer. Okay.
है ना. So it is asking you to complete the planned arrangements before releasing the product, and it asks you to retain the documented information on the release of products and services, which includes evidence of conformity with respect to criteria and traceability to the person authorizing the release. Okay, now many of the people, or 2 or 3 replies I got, they related it to the traceability to the person. Actually, if you see here, it is clearly traceable ki who has authorized. Mr. ABC has authorized. Actually, he is not authorized to do so, but he has released the product. है ना? He has authorized the product for the release, but actually he is not responsible nor he is authorized. Who was authorized? Who was authorized? QC manager is authorized. So the release of the product by the quality manager is a planned arrangement, because in the product release procedure that the organization has made, wherein they must have written so many things कि कहाँ पे चेक करना है, कौन सी स्टेज पे मटेरियल चेक होगा, क्या क्या करेंगे. ओके, ऑल दिस थिंग मस्ट हैव बी रिटन देयर. एट द सेम टाइम उसी प्रोसीजर में ये भी लिखा हुआ था कि QC मैनेजर इज मेड रिस्पॉन्सिबल एंड ऑथराइज्ड टू रिलीज द प्रोडक्ट, release of all products for dispatch. It means they are not completing the planned arrangements. Here the dispatch supervisor says कि normally they don't seek the release authorization. We do not seek the release authorization in the normal case, but actually it is required as per their own procedure. It means they are not completing the planned arrangements, whereas the standard is asking you to do so. Where it is asking? The standard is asking you to complete the planned arrangements. The release of products and services to the customer shall not proceed until the planned arrangements have been satisfactorily completed. और planned arrangements में जो release है, that is also one of the activity. Release of product is one of the activity. So how it has been released for dispatch without a proper authorization? It means the planned arrangements has not been completed. Okay, it has not been satisfactorily completed. So अभी आपको क्या लिखना है फिर यहां पर? मिस्टर और मिस XYZ जो भी है ना, जो भी लोग लिखेंगे इसको, क्लॉज नंबर व्हाट? 8.6. व्हाट इज दैट? रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो आप लिख दीजिए इसको, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एक्चुअली व्हेन यू राइट द एनसीआर रिपोर्ट विच आई हैव शोन टू यू यस्टरडे, वहां पे क्लॉज रिक्वायरमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, आपको डायरेक्ट एनसी लिखना पड़ता है. बट व्हाई आई हैव गिवन यू हियर? क्योंकि आपको अगर क्लॉज रिक्वायरमेंट आपने प्रॉपर लिखा तो अल्टीमेटली एनसी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर लिखोगे, क्योंकि एनसी स्टेटमेंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द रिक्वायरमेंट. उसको निगेटिव में जब करेंगे हम रिक्वायरमेंट को, नॉट, नो, कुड नॉट, उसमें जब डाल देंगे तो हो जाएगा वो एनसी स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज द requirement of this clause then? This is the requirement. The release of products and services to the customer. The release of product. Actually now you are dealing with the auditing of products. So miss, you are manufacturing, उनके scope में सिर्फ product है, it is not servicing. So don't write same to same thing. Okay, the release of products shall not proceed until
all the planned arrangements are satisfactorily completed. This is the requirement. And what is the non-conformance? The non-conformance is the products are released for dispatch without completing the planned arrangements. This is your statement. आपके स्टेटमेंट में कहीं पे भी सुपरवाइजर का नाम, प्रोडक्ट का नाम वो नहीं आना चाहिए. नॉन कन्फॉर्मेंस स्टेटमेंट इज जस्ट related to your requirement, either related what has been written in your organization procedure or it is as given in the standard. उसके just opposite होना चाहिए कि ये complete नहीं किया गया है. You will not write even manager's name. You will not write QC manager, QC supervisor, nothing. You just need to say कि planned arrangements have not been completed. क्योंकि ये requirement था कि होना चाहिए before the dispatch, but हमने नहीं किया था. That's why just is the screen not visible to you? Whatever I am writing? No, sir. No, you people should see. I am writing all these things. Okay, so what screen you were seeing? No issues. So this was the requirement. You people were able to see this. We have discussed this requirement here. Yes, sir. The release of products and services to the customer shall not proceed until the planned arrangements have been satisfactorily completed. This was the requirement. So when we write the NCR report, this clause number 8.6, release of products and services, and the clause requirement. Normally I told you in the NCR report, requirement is not required to be written on the NCR report. There is no provision actually, but it is a good practice कि आप कहीं ना कहीं उसे लिखिए and based on that requirement create a non-conformance statement. So the release of products and services or products here in this case shall not proceed until the planned arrangements are satisfactorily completed. ये हमारे requirement थी. Okay. Now non-conformance will be just opposite to that. The products are released for dispatch without completing the planned arrangement satisfactorily. अब जैसे मैंने आपको बताया था, in the non-conformance statement, no, you don't have to mention the evidences in that one. Normally you people are making mistake that you mention that okay, the quality manager has not released the product, okay, or it is not traceable to the quality manager. No, you don't need to mention that here. Okay, simply keep it has not been this one as per requirement. Yeah, if the requirement is as per given in the organization's document, and it is not always the 9001 2015, it can be related to the your organization's document also. In that case, you need to mention the organization's document number for the reference here. Got it? If the additional requirement is there which is not been given in the 9001 standard, your organization can have your own requirements more than what is stated in the 9001. Now in the evidence you need to write the things like what was the product number 1 2 3 4 5 6. So product number 1 2 3 4 5 6, and here you can say interviewed. Whom you interviewed? Interviewed Mr. ABC, I think. Not warehouse supervisor. Okay. So now the name of the dispatch supervisor should be there. We have not captured it here, but you can write interviewed Mr. So and so. Okay. JKL. He was a dispatch supervisor.
You interviewed him. Product number 1236, 123456 was lying ready for dispatch. इसका मतलब it has been cleared for dispatch, है ना? It is cleared for. You have asked him, is it cleared for dispatch now? So he said yes, it can be sent to the customer. Now you can write authorize. You can say release, है ना? Release authorized by QC, junior supervisor QC, Mr. ABC. Junior supervisor QC, है ना? As per प्रोसीजर नंबर, जो भी उसका डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर नंबर होगा, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स, the final releasing authority is QC manager. Okay, that is what is written in here. So who is responsible? QC manager is responsible as per that procedure number so and so. This is the evidence. These evidences are supporting that yes, the products are released for dispatch without completing the planned arrangements. You are saying कि release किसने authorize कर दिया? इन्होंने किया. But still अगर आपने सिर्फ इतना ही लिखा और ये नहीं लिखा, if you have not written this one, then your evidence is not complete. You are saying कि release is authorized by this person. Okay, release is authorized by Mr. ABC. So this is not the non-conformance कि ABC ने कर दिया, that is not the non-conformance. Okay, ये इन्होंने नहीं किया. It should have been done by QC manager, but it has done by junior supervisor. That is the NC. So where it has written कि QC manager को करना है, ISO में तो नहीं दिया हुआ है. That's why you give here कि procedure number so and so, name so and so, the final releasing authority is QC manager. You are mentioning here. Now your NC is complete. Okay, this is how your NC is complete. अगर मैंने आपको बताया रहता, now just imagine a thing कि you final inspection record you check for this one and find that the product is released but there is no mention of who has released the product. अगर यहाँ पे मैं ये कर देता हूं कि find that the product, find the release, the product is released but no mention of person authorizing the release. Now आप बताइए आप नॉन कन्फॉर्मेंस क्या देते? What the non-conformance you will put in such scenario? अब कौन सा नॉन कन्फॉर्मेंस आएगा यहाँ पे? Will it be the same कि प्लान अरेंजमेंट नहीं हुई थी, या इट विल बी समथिंग डिफरेंट? अब क्या आएगा? What is the requirement? Yes, people. Who is now, what kind of non-conformance statement will be there? First thing, what is the requirement? 8.6 तो पूरी बहुत सारी requirement, but now related to this non-conformance, what is the requirement? क्या लग रहा है आपको? I am saying कि जिस पर्सन ने उसको ऑथराइज किया था रिलीज, उसका कहीं पे भी नाम नहीं है ना? उसका कहीं पे भी नाम नहीं है. दिस इज द सिनेरियो नाउ. एंड ये आगे का कुछ भी नहीं है, समझो आप, है ना? आगे का कुछ भी नहीं है. जस्ट इमेजिन कि ये नहीं है. अब पता ये कौन सी रिक्वायरमेंट 9001 की ये मीट नहीं कर रहा है. यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है.
The release of products and services to the customer shall not proceed until the plan arrangements have been satisfactorily completed. नहीं Unless देखिए, हाँ यस, बोलिए आप आगे. unless otherwise approved by a relevant authority and as applicable by the SOP. नहीं अभी देखिए कि आप सोचिए कि उन्होंने कर दिया, मीन्स जो जो उन्होंने लिखा था, ओके, उनकी प्रोसीजर में भी लिखा था कि ओके आपको ने क्या जो प्रोडक्ट रिलीज का जो टेस्ट रिकॉर्ड जो है उसके डाटा अगर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन रहते हैं तो दे कैन सेंड द मटेरियल. वो तो उनकी प्रोसीजर में लिखा है, बट इज इट ओके एज पर द रिक्वायरमेंट? क्योंकि वहां पे आप किसने रिलीज किया वो लिखा ही नहीं है, हु हैज ऑथराइज द रिलीज वो लिखा ही नहीं है. तो कहाँ पे रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि वो पर्सन का नाम आपको पता होना जिसने रिलीज किया हो. इज इट मेंशन देयर? अभी ऑर्गेनाइजेशन ने तो बोल दिया It कि यस should दिस इज, हाँ the traceability of the person हाँ who has authorized the release should be यस mentioned. यस. तो नाउ यू आर गोइंग हियर. उन्होंने प्लान अरेंजमेंट्स तो कंप्लीट कर दिया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उतनी प्लान अरेंजमेंट लिख दी थी कि यस ऐसा करेंगे, बट एक्चुअली एज पर स्टैंडर्ड इट इज रिक्वायर्ड. तो यू कैनॉट ओमिट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड. आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं हमारे प्रोसीजर में लिखा है. योर प्रोसीजर शुड बी कंफर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. ISO 9001 की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी प्रोसीजर्स में आपने या फिर आपकी जो एक्टिविटीज है उसमें आपको इनकॉर्पोरेट करना ही है. हाँ, उससे ज्यादा कुछ करना है तो कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल. उससे कम नहीं कर सकते आप, ठीक है ना. अब यहाँ पे नॉन कन्फॉर्मेंस क्या आ जाएगा इस सिनेरियो में? द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, ओके, डज नॉट इंक्लूड. उसमें क्या बोला था उन्होंने? शैल इंक्लूड. डज नॉट इंक्लूड ट्रेसेबिलिटी टू द पर्सन ऑथराइजिंग द रिलीज. सो यहां पे जब हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट मी क्लियर इट. सेम है ना, सिनेरियो सेम है, थोड़ा सा चेंजेस हो गया है. सो द रिक्वायरमेंट इज दैट द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन documented information related to product release and the evidence just a minute, documented the documentation and it should include traceability to the person. And it should include traceability to the person authorizing the release. है ना. The organization shall retain documented information related to product release and it should include traceability to the person authorizing the release. That is what is requirement is there. And now what will be the non-conformers? The documented information related to product release does not include traceability to the person authorizing the release. सेम टू सेम लिखना है आपको, कोई ये नहीं करना है. बस उसको कैसे भी करके निगेटिव स्टेटमेंट में आपको लेके जाना है कि द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट रिलीज डज नॉट इंक्लूड और it is not evident product does not include, yeah it is okay, and it does not include traceability to the person authorizing the release. अब एविडेंस में क्या हो जाएगा? आपको वो डॉक्यूमेंट रिलीज का जो है डॉक्यूमेंट या जो आपका प्रोडक्ट रिलीज का जो डॉक्यूमेंट है दैट इज इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, जो भी होगा आपका, है ना, इंस्पेक्शन रिपोर्ट नंबर सो एंड सो, डेट सो एंड सो, शिफ्ट सो एंड सो, है ना, प्रोडक्ट
is conforming to all requirements and cleared for dispatch, but no mention of person authorizing it. That is the evidence. अगर कोई बोलता है कि कहां पे हुआ है ऐसा, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट नंबर दिस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट नंबर दिस, ऑन दिस डेट, इन पर्टिकुलर दिस शिफ्ट, the product was released to the customer, means made, it is released for the dispatch to the customer, but there is no mention of the person authorizing it. now देखिए सेम सिनेरियो में अलग रिक्वायरमेंट आपने मीट नहीं किया तो अलग नॉन कन्फॉर्मेंस बन जाएगा. इसलिए आपको देखना है कि हम कौन सी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हैं. तो वो आपको जो ऑब्जर्वेशन स्किल है आपका, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लॉजेस, वो आपको एनहांस करना है ना. The end of this training program or getting the certificate, actually it is not the end of this internal auditing, it is actually a beginning for you people. और ये आप तब कर पाओगे जब आप इस चीज, जैसे होता है ना कि आपको प्रैक्टिस करना है इन चीजों का. whatever the skills, not only the auditing I am talking about, any knowledge, any skill that you gain, if you do not practice, what will happen? You will forget. You need to sharpen it by utilizing it. If you have a knife and you have kept it as it is for a long, it will lose its sharpness. You have to keep on using it. You have to keep on using it and then again sharpen it by way of acquiring knowledge from here and there. From whatever the resources you can gather the knowledge, gather it. अभी आप बताइए इसमें कोई डाउट किसी को या डिफरेंस व्यू पॉइंट, इसके ऊपर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? Okay, so we will move forward. So this was the 3 scenarios we have discussed. Now we are concluding this training program. We have covered all the topics related to this training program, and now we will quickly go through whatever we have learnt. So we are basically summarizing the session now. What you have learned from this training program? We have seen the principles of quality management system. We have seen various vocabularies related to the auditing, related to the 9001, ISO 9001. We have seen ISO 9001 2015's clause structure, various clauses, their requirements. We have discussed in detail. Many of the documents we have discussed. One document that related to the competency norms, that I am going to share with you. Mrs. Deshmukh has asked that one, so I will share with you all people on your WhatsApp. Auditing method we have seen. Before that, PDCA cycle in the ISO 9001, which clauses are basically related to which part of the PDCA cycle that we have seen. Auditing method, which included the personal traits of an auditor, what types of qualities of an auditor that we have seen, various types of questions we have seen, किस तरह की questioning हो सकती है. We have seen that how to gather the information, how to carry out the interview of the auditee, how to plan the audit, how to schedule the audit, what is the content of that schedule, we have discussed in detail. Observation sheet क्या होती है, how to make the checklist for auditing. Then we have seen the turtle diagrams also. We have seen it for 3 different sections or 3 different processes. NC statement exercise, how to write the audit evidences, that we have seen. So in the principles of quality management system, there are how many principles? 7 principles of quality management system. The customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence based decision making, relationship management, and
these 7 principles of the quality management system has been addressed, focused on particular clauses of the ISO 9001, like customer focus. This is also one of the ready reckoner. Whenever there is certain thing related to the customer focus, go through this one, go to this particular clauses like 4.1, 4.2, 5.1, that leadership and commitment, the 8.2, 9.1.2, 9.3, 10.1, all these clauses are related to the customer focus, how an organization is focusing on the customers, because customer should be in your focus. Customer, your existence, organization's existence primarily is primarily because of the customer. If an organization loses the customer focus, it loses the market, it loses the ground. Got it? So customer focus should be at its apex of an organization's, say you can say, working or strategy. Then comes leadership. The entire clause number 5 is focusing on the leadership, what a leader should do, what activities to be performed by the leader, how they should ensure that yes, quality management system is focused and continually improved in the organization. They have to provide the resources. Then in the 6.2 planning clause, in the 7.1.4, all these clauses are related to the leadership. The engagement of the people. An organization is run by the people. A collective effort of all the people will take organization to higher levels. The people engagement is very, very important aspect. If you have a competent people, if you have a skillful people, a people with the right mindset, right attitude, as a team you can achieve anything. Anything and everything will be possible for you as a team. So that engagement of the people is important, and that has been focused, because you see, quality management system, it is not just the quality. Okay, the name is there, that quality management system, but it includes all these, and these principles you have to work on. Then process approach 4.4, 8.1 focuses on the process approach. The processes, various activities of the organization shall be treated as a, say, supporting each others. It is not like standalone process, it is not a standalone activities. A process needs to be planned, it needs to be carried out, then again it needs to be checked, and again the process needs to be, whatever the gaps are there, you need to act upon that. The PDCA cycle, what we have seen, the turtle diagrams, and all these adequates the process approach. Improvement 4.4, 10.3, it focuses on the improvement. Evidence based decision making 7.1.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, all these are focus on the evidence based decision making. The organization shall take the decisions based on certain evidences. Whatever the decisions you are taking, what it should be backed with certain data, backed with certain analysis. So you need to analyze the data, you need to monitor the data, and then you need to improve. And then relationship management 8.4, 9.1.3, 9.3.2, it talks about the relationship management. Okay, so relationship means it is with your interested parties. Got it? Then we have seen the ISO 9001 2015's clause structure.
10 clauses are there with certain annexures also. The forwards and all these things were there. So go through this, make a habit that okay, every day morning it takes hardly 5 minutes to go through this slide. Now make it a habit ki every day morning I will wake up and I will go through all this this particular slide or this particular picture. कितने clauses है? Okay, clause number 4, context of the organization. Okay, then there are 4 certain, or you start with one clause at a day. Clause number 4, Monday, clause number 4. 1 to 3 are simple. Okay, scope, normative reference, terms and definition. Monday, you just go through clause number 4, context of the organization. There are 4 sub clauses. Read that aloud. Loudly, read that loudly. Then Tuesday, leadership, planning. So 7 clauses are there. One clause for a day. And you have to invest hardly 2 to 3 minutes to read the clause. Only the clause. Clause. I am not going into the contents now. आप सिर्फ इसके क्लॉज नंबर्स पढ़िए, क्लॉज में क्या लिखा है पढ़िए, तो बाय हार्ट आपके हो जाएगा. देयर वाज अ क्वेश्चन कि हम इसको कैसे याद रखेंगे, है ना. तो आई कैन गारंटी अगर आप दिन में सिर्फ एक क्लॉज के ऊपर ध्यान देंगे, 1 महीने के अंदर आपको सब क्लॉज याद हो जाएंगे. Anybody can, if I ask you what is clause number 8.7, you will say कि 8.7 related to the operation and control of non-conforming product or control of non-conforming outputs. 8.3 डिजाइन का है, 8.4 एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स का है, 8.6 प्रोडक्ट रिलीज से रिलेटेड है ना. तो 9.2 रिलेटेड टू योर इंटरनल ऑडिट, 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग और मैनेजमेंट रिव्यू उसके रिलेटेड है, 7.2 कॉम्पिटेंस, 7.3 अवेयरनेस. ये आपको याद हो जाएगा अगर आपने डेली बस एक क्लॉज को लेके चलिए, उसको जोर से पढ़िए. देन वी हैव गॉन थ्रू द टर्टल डायग्राम. हमने 3 टर्टल डायग्राम डिस्कस भी की थी. ओके, कि उसके अंदर कोई भी प्रोसेस रहे, देयर विल बी अ इनपुट, देयर विल बी अ आउटपुट, प्रोसेस नेम एंड प्रोसेस ओनर्स विल बी एट द सेंटर. देयर इज अ इनपुट, देयर विल बी आउटपुट, देन you require certain resources to carry out this process, तो वो resources आ जाएंगे यहाँ पर. then you need certain controls to ensure that these processes will perform as you are planning. It should not perform today, it performs in one way, tomorrow it will perform in another way. No. So for that certain controls are required. So what kind of documentation control or what kind of say any kind of control you have on these processes. Then is anything outsourced related to this one? Risk associated with this process, it is very important. Yesterday we have seen कि risk associated with the product release, conformity of the products and services, it needs to be addressed. That is a requirement, है ना. क्लियर कट रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई रिस्क रिलेटेड टू द कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स है, वो एड्रेस करनी ही है आपको. तो रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, सभी रिस्क, हाउ अ प्रोसेस कैन गो रॉन्ग, दैट इज अ रिस्क. you need to a very good tool is there like FMEA, but normally used by the automotive companies, and the companies they follow failure mode and effects analysis. It's a very good preventive tool, but anyway you can use the risk analysis here, risk and opportunity document you can create. Then how you are going to carry out the process, utilizing which human resource, what are their competence, what are their skills, who is the that sub process owners, if there are, you can write that. The output of this process, what you expect from this process, that is the output. And then the various results, what are the results of the how you are going to monitor this process, the KPIs, the quality objectives. So all these will be included into the turtle diagram. So that we have seen in detail. We have seen the vocabularies, 1 or 2 I will go through again, है ना. Because you see every day again a task to you that every day try to learn 1 or 2 vocabularies, or
important vocabularies you can write it down on your notebook, है ना. A best thing to remember the vocabulary is to write it down, है ना. Just by reading, the effectiveness of remembering is hardly 50%. If you read and write, if you read loudly and write, it will be very easier for you to remember for a longer period of time. So, like top management is a person or group of people who directs and controls an organization at the highest level. What is the organization? Person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities, and relationship to achieve its objectives. Whenever there is a mentioning of the organization in the ISO 9001, that is not to the top management, not to the company. It is related to a person. When it says the organization shall implement planned arrangements and this and that, it means it is not MR will do or document controller will do. It is the responsibility of that particular person who has been given the responsibility to handle these things. The organization shall maintain the infrastructure. It means top management is not going to come. Infrastructure maintain करने की जिनकी जिम्मेदारी है, like maintenance people. So the organization there, it means the persons or the group of persons who handles that particular activity. So we have gone through many of such vocabularies. Now what is auditing? We have gone through the auditing. It is a very effective tool for determining the level of conformity of organization management system to the selected criteria. And your aim of auditing should be assessing the implementation, effectiveness, and efficiency of organization's management system. Because auditing is a systematic, independent, documented process for obtaining objective evidences. You obtain the objective evidence and evaluate it against the criteria. Checking the conformance to the criteria is the audit. हमने क्या किया? तो आप जब ऑडिट करने जाओगे, यू विल टेक सर्टन सैंपल्स. आप किसी लोगों का इंटरव्यू लोगे, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, कोई फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट का ऑडिट कर रहे हो, आप टेस्टिंग के ऑडिट कर रहे हो, आप क्या करोगे? टेस्ट के रिजल्ट्स है, यू विल कंपेयर इट विद द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, एंड इफ it is meeting the customer specification, okay, the product is conforming, and if it is not meeting the requirement, it means the product is non conforming. So what actually you are doing? You are checking the material or the data, the objective evidence against the criteria. In auditing, same way. But auditing is not a fault finding. Okay, auditing is a fact finding exercise. It is a exercise you carry out to improve your system. So आपका एज अ ऑडिटर एम होना चाहिए कि मैं अपने सिस्टम में किस तरह से इंप्रूवमेंट ला सकता हूं, फर्दर इंप्रूवमेंट, ना कि किसी की गलतियां निकालना है. ओके, डेफिनेटली whenever there is a gap, it is because of somebody's fault, है ना. But that fault, the focus should not be on the fault, focus should be on how we can resolve it, and how we can move forward by resolving it, how we can improve by resolving it. That should be the focus. We have seen a typical audit process flow. क्या होता है? सबसे पहले हम audit plan और audit schedule बनाएंगे, फिर either check sheet से utilizing the PDCA cycle, utilizing the turtle diagram, हम या फिर based on your experience you carry out the audit, you raise the non-conformance. If there is any non-conformance, you will raise the non-conformance in the NCR sheet. Then you follow for the actions, correction, corrective action, and then the closure of the NCs. We have yesterday seen a typical procedure for the internal audit. Then audit question types हमने देखे थे.
क्योंकि ऑडिट में आपका इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ, तो यू नीड टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस and various question types. These are only 5 I have mentioned, but there will be more than that. Okay, open ended, open not ended, open question type, close ended, probing question, leading question, hypothetical question. So आपको जो आपके क्वेश्चंस की चॉइस है, कौन सा क्वेश्चन कब पूछना है, कहां पूछना है, दैट मैटर्स अ लॉट, है ना। आपको आपके ऑडिटी को कंफर्टेबल करना है. यू नीड टू make the your auditee comfortable so that they answers truthfully, they answers confidently, and they answer properly, giving all the required details. If he is not comfortable, she is not comfortable in answering, you will get partial information. So to get a proper information, you need to make the auditee comfortable, है ना. Now when you go for the audit, how you are going to collect the information? Ways of collecting information. It is by way of interviewing the employee or auditee, observing the activities, checking the documented information, जैसे कि स्पेसिफिकेशंस है, कैलिब्रेशन के रिकॉर्ड्स है, प्रोसीजर्स है, ड्राइंग्स है, ऑडिट रिपोर्ट्स है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स है, ये सब चीजें आप देख सकते हो. Checking the KPIs, performance indicators, data analysis of the data, quality objectives, यहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, है ना. फिर रिपोर्ट्स ऑफ कस्टमर फीडबैक है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स है, इससे आप कर सकते हो. एंड देन डाटाबेस एंड वेबसाइट जो होती है उनकी, अगर है ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर अगर वो यूज कर रहे हैं, तो वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, एविडेंसेस आप वहां से ले सकते हो. गॉट इट? Then typical process flow of collecting an information to reach audit conclusion. किस तरह से आप ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचोगे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर आप क्या करोगे? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, जो वेरियस वेज मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया. देन आप उसको एज अ ऑडिट एविडेंस रखोगे. नाउ दिस एविडेंस यू विल इवेल्युएट अगेंस्ट द क्राइटेरिया, कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है. रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में जब हमने ऑडिट एविडेंस को चेक किया, तो हमारी ऑडिट फाइंडिंग हो जाएगी कि whether it is a NC or no NC. Then you are going to review the audit finding and audit conclusion. ये मैंने बताया था कि normally it happens in the external audits. Audit finding means either it is a NC, it is a positive thing, that is no NC, or it is a opportunity for improvement. है ना. इस तरह से आपका ऑडिट कंक्लूजन तक आप पहुंचोगे. दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, ऑडिट रिपोर्टिंग इन NCR फॉर्मेट. then your company must be having some other format. It's okay. ओनली थिंग वहां पे करेक्शन, करेक्टिव एक्शंस होना ही चाहिए. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? होना ही चाहिए. नॉन कन्फर्मेंस का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, क्लॉज रेफरेंस या डॉक्यूमेंट रेफरेंस, एविडेंस, ये होना ही चाहिए, है ना. नॉर्मली ये होना ही चाहिए. ठीक है. सो इफ यू पीपल रिक्वायर, आई कैन शेयर दिस फॉर्मेट ऑल्सो विथ यू. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू आउट दिस सेशन. अगर इसके ऊपर किसी के क्वेश्चन है, सो यू पीपल कैन आस्क, और एट द एंड ऑल्सो यू पीपल कैन आस्क. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू गेट इवेल्युएटेड, आपका इवेल्युएशन कैसे होगा टू गेट द सर्टिफिकेट, है ना. देयर आर 4 असाइनमेंट्स. असाइनमेंट नंबर 1 जो रहेगी वो ऑनलाइन टेस्ट रहेगी. तो जिन लोगों के ऑलरेडी हमारे क्वालिटी मंत्रा की वेबसाइट पे यूजर नेम बने हुए हैं, जैसे कि मिस्टर सरवणा का यूजर नेम बना हुआ है ऑलरेडी, सो ही डोंट हैव टू मेक क्रिएट अ यूजर नेम अगेन, है ना. ही डोंट हैव टू क्रिएट द यूजर नेम अगेन. मैं एक कोर्स उनके इसको अलोकेट करूंगा, तो जब वो वहां पे जाएंगे वेबसाइट पे, ही विल बी एबल टू एक्सेस दिस 9001 कोर्स, एंड इन दैट द असाइनमेंट, दैट इज क्विज नंबर 1, ही विल बी एबल टू. सो ये ऑनलाइन टेस्ट है, वहां पे सर्टन क्वेश्चंस है आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं. आपको जस्ट सिलेक्ट करना है, नो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इन टेस्ट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1. आपको जस्ट चूज करना है, टिक करना है. आप जब उसको अटेम्प्ट करोगे और सबमिट करोगे, इमीडिएटली आपको वहां पे स्कोर आएगा. आपको स्कोर का स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ शेयर करना है व्हाट्सएप पे.
आपको ट्रूथफुली करना है, क्योंकि मैं आपके वहां पे जाके बैकएंड पे जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि आपका एक्चुअल स्कोर कितना है ना। बट मुझे ये नहीं पता रहेगा कब आपने अटेम्प्ट किया, इसलिए जब भी आप अटेम्प्ट करोगे आप मेरे साथ वो शेयर कीजिए, ताकि अदरवाइज मुझे रोज जाके वहां चेक करना पड़ेगा कि आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, है ना। सो दैट आई डोंट वांट टू डू। यू ट्रूथफुली शेयर वट एवर द स्कोर यू हैव रिसीव्ड, है ना। देन असाइनमेंट नंबर 2 जो है ऑफलाइन है, वो भी ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर है, या फिर मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा असाइनमेंट नंबर 2। उसके जो आंसर्स है ना, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, तो आपके उसके आंसर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स रहेंगे। एंड आई वांट दैट आंसर्स नॉट टाइप्ड इन अ टाइप फॉर्मेट, आई वांट इट टू बी रिटन हैंड रिटन, वो हैंड रिटन होने चाहिए आपके आंसर। तो आप सिंपल पेपर पेन पे उसके आंसर्स लिख के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे उसके फोटो लेके, है ना। फिर असाइन नंबर 3 है प्रिपरेशन ऑफ अ टर्टल डायग्राम फॉर अ गिवन प्रोसेस। तो हर एक जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है सबको एक एक प्रोसेस में दूंगा। जैसे 3 प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, तो मैं उनके आपको नहीं दूंगा, आई विल गिव यू सम अदर प्रोसेस टू यू। आपको उसका एक टर्टल डायग्राम बनाना है, ट्राई टू मेक, है ना। डोंट वरी कि आप मिस्टेक कर रहे हो क्या कर रहे हो, जितना हमने आपको सिखाया उसके बेस पे कुछ तो बनाइए। इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, किस तरह की उसके अंदर ये आ सकती है, रिस्क आ सकती है ना, क्या सपोर्ट लगेगा, क्या आउटपुट रहेगा, क्या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आप लोगे। तो आई विल, देर आर टू वेज, है ना। आइदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका बनाइए, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट यू कैन प्रिपेयर टर्टल डायग्राम फॉर एनी अदर प्रोसेस, किसी और प्रोसेस का भी आप बना सकते हो, बट नॉट ऑफ द वंस वी हैव डिस्कस इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। 3 हमने डिस्कस की थी, कैलिब्रेशन, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट एंड मेंटेनेंस प्रोसेस। इसको छोड़ के आप किसी और का बना सकते हो, ठीक है। बट मैं आपके साथ आपको बताऊंगा कि आप इसका बनाइए। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपको लगता है कि आप किसी और का बना सकते हो अच्छे से, तो आप वो बना के दीजिए। प्लेन पीस ऑफ पेपर पे आप हाथ से भी आपका वो फॉर्मेट बना सकते हो इसका टर्टल डायग्राम का, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था वो फॉर्मेट। तो आप उसी के पीस ऑफ पेपर पे पेन से करके आप मुझे सबमिट कीजिए व्हाट्सएप पे। एंड असाइनमेंट नंबर 4 इज अ एनसी रिपोर्ट प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द ऑडिट सिनारियो। अब ये जो हमने प्रैक्टिस की थी अलग अलग सिनेरियोस की, दिस इज फॉर टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द असाइनमेंट नंबर 4। सिमिलर वे से आपको मैं एक सिनेरियो दूंगा, नॉन कन्फॉर्मेंस सिनेरियो, आइदर क्लॉज नंबर 4 से लेके 10 कहीं भी वो फिट होगा। तो आपको जस्ट जैसे हमने प्रैक्टिस की थी अभी, क्लॉज नंबर के आपका नाम, क्लॉज नंबर क्या है, फिर उसका रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन कन्फॉर्मेंस क्या है और ऑडिट एविडेंस क्या है, बस इतना लिखना है ना। सो ऑलमोस्ट आई विल गिव यू 1 पर्सन, 2 से 3 सिनारियो मैं आपको भेजूंगा, है ना। द पासिंग क्राइटेरिया इज 75% मिनिमम। एंड जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप पहले इसमें आपका स्कोर नहीं आता, यू कैन री अटेम्प्ट इट ऑल्सो। दूसरी बार भी नहीं आता है, डोंट वरी, है ना। यू डोंट नीड टू से वरी अबाउट दैट वन। मैं आपके लिए री अटेम्प्ट और खोल सकता हूँ, एक्स्ट्रा आपको दे सकते हैं री अटेम्प्ट। बट एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इफ इन द फर्स्ट इंस्टांस आपका अगर स्कोर नहीं आता है, बिफोर अटेम्प्ट इन सेकंड टाइम प्रॉपरली स्टडी कीजिए 9001 को, तभी अटेम्प्ट कीजिए। 9 वो जो असाइनमेंट है इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी 9001 एंड द ट्रेनिंग मटेरियल, मींस व्हाट एवर द ट्रेनिंग वी हैव डिस्कस इन द ट्रेनिंग सेशंस, उसी के बेस पे है, ठीक है। यू पीपल शुड अटेम्प्ट इट बाय 10th of February। आप उससे ज्यादा भी ले सकते हो, आई डोंट हैव एनी इशू, बट नॉर्मली क्या होता है फिर एक बार डिले हो गया ना तो इट गोज, मींस एक एक महीना लगा देते हैं लोग। सो बेटर नाउ, टुडे इज द 3rd, वी हैव 7 days इन हैंड, संडे आ रहा है बीच में एक, तो प्लीज स्पेयर सम टाइम एंड बाय 10th of Feb सबमिट ऑल दीज थिंग्स, है ना। सो टुडे आफ्टर द सेशन आई एम गोइंग टू सेंड यू असाइनमेंट नंबर 2, 3 एंड 4। ओके, 1 आप ऑनलाइन कीजिए, उसके लिए मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करूंगा। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर अ लिंक विथ यू कि आप उसके ऊपर रजिस्टर कैसे करोगे, है ना। आपको वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और फिर मैं आपके उस लॉगिन आईडी पे, यूजर नेम पे ए कर दूंगा, उसको असाइन कर दूंगा 9001 का कोर्स। तो पुराने जो वीडियोस है आपको वहां मिल जाएंगे, जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसके वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे, सबसे पुराने सेशन के, एज वेल एज ये क्विजेस वगैरह मिलेगी। उसके अंदर आपको कुछ भी डाउट होता है तो यू पीपल कैन आस्क अस।
है ना. We will be more than happy to assist you. आपको जब भी टाइम मिलता है. हाँ, यस यस मिसेस देशमुख. सर, जो ये आपने दिखाया था, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है 8.6 का क्या रिक्वायरमेंट है, हाँ. 8.1 का क्या रिक्वायरमेंट है, वो तो एक शीट पे आपने दे दिया कि क्या क्लॉज है, उसका क्या हेडिंग है. लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है, जैसे 8.6 का रिक्वायरमेंट है और उसका डिटेलिंग दिया है, तो वैसा स्लाइड शो आप दे सकते, मतलब प्रोवाइड करने वाले हैं क्या? मतलब वो वन हम प्रिंट करके रख सकते हैं और रेडी टू रेफरेंस रहेगा कि 8.6 में क्या रिक्वायरमेंट है. जैसे अभी आप बताते हैं तो समझ में आ जाता है जल्दी से, लेकिन जब हमको वो प्रैक्टिस नहीं और हम रिलेट करने जाएंगे तो वो रेडी टू यूज रेफरेंस होगा कि उसमें से पढ़ के हम रिलेट कर सकते हैं. बट दैट रिक्वायरमेंट इज देयर इन द 9001. आपके पास 9001 का स्टैंडर्ड होगा, 9001 2015 का. To know the detailed knowledge of ISO, which I not able to get in the organization. So it is really helpful, sir. Okay, And the content and all things are very good, sir. Okay, thanks Abbas. Thanks for Thank you, your sir. words of appreciation. Yeah. Anybody else wants to speak? Okay, so shall we close the session? Yes, Mr. Prashant. Sir, thank you. Yes, thank you very much, sir. It was a good learning session for us. We hope that by your guidance, we will improve our skills and hope to be in touch with you in case of any difficulties, or we'll definitely call back to you, sir. Yes, sure. You can reach out to us anytime. You know, any difficulty or any input you want from us related to the auditing, related to the documentation, you know, we are always there. And it is not that after the training session over or after the audits, after the certificate being issued to you people, we are not cutting our interactions with you, and we are always there. Sir, is it possible to have discussion with call on call? Yeah. You just first what you need to do, you drop a message over a WhatsApp, you know, with your queries, and you want certain discussion, you can call also. You know, if we didn't pick up means we are busy somewhere, we will definitely call back. Yeah. You know, no issue at all. Okay, sir. Okay. Thank you very much. Thank you. Welcome, Mr. Yes, Mrs. Deshmukh. You are raised the hand. You want to speak, Mrs. Sanmani? Okay. So, okay, we will close the session. Thanks a lot for being there and taking the efforts. I really understand that, okay, after attending the 8 hours of duty throughout the day, and you are here and attending the session also, focusing on the learning also. So that's really great effort by you people, and I appreciate that. It will take you to the higher levels in your say your profession, your job. You know, so all the best to all of you. See you on any of our other courses also. So bye, good night, take care. Bye, sir. Good night. Yeah, bye.